हेलो गाइस, दिस इज़ मी टीआरएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे 80 आर्टिकल्स की, जो कि एनटीपीसी के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, सो यार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 32। Question number 2, which article prohibit discrimination against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth। So ये सब आपको पता ही है, इजी है। ऑप्शन बी आर्टिकल 15। Question number 3, the abolition of titles is provided under which article? So here option B is the correct answer, that is article 18। Question number 4, the right to education for children 6 to 14 years was inserted as a fundamental right under which article? So right to education किस आर्टिकल में इंसर्ट किया गया था? दैट इज ऑप्शन बी आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डबल जियोपार्डी। मतलब कोई भी पर्सन को अपना एक ऑफेंस के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, दैट इज आर्टिकल 22, 20 का क्लॉज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच आर्टिकल। सो यार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फंडामेंटल ड्यूटीज को 51 क्लॉज ए में ऐड किया गया था। Question number 7, under which article the annual financial statement that is union budget laid before parliament? So recently ही ये किया गया था, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था, दैट इज अंडर आर्टिकल 112। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, which article defines ए मनी बिल। मनी बिल को किस आर्टिकल डिफाइंस करता है? दैट इज आर्टिकल 110। क्वेश्चन नंबर 9, which article empowers the president to promulgate an ordinance when parliament is in recess? जब पार्लियामेंट रिसेशन में होता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि एक ऑर्डिनेंस वो प्रोमulgate कर सकते हैं। तो वो किस आर्टिकल के थे? दैट इज आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 10, द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर व्हिच आर्टिकल? अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 76 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच आर्टिकल डिस्क्राइब्स a joint sitting of both houses of parliament? So option B is the correct answer, that is 108। Question number 12, which article provides for the writ jurisdictions of the high court? So ये भी easy है, option C is the correct answer here, article 226। Question number 13, under which article is the governor empowered to promulgate ordinance? So ordinance कौन इशू करते हैं? यहाँ पे गवर्नर। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? दैट इज आर्टिकल 213। ठीक है, 213। और जो प्रेसिडेंट का वो किस आर्टिकल में दिया गया है? दैट इज आर्टिकल 123। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट? ठीक है, सो इस आर्टिकल के तहत अगर कोई एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसे एबोलिश किया जा सकता है, और नया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे क्रिएट भी किया जा सकता है। तो कौन सी आर्टिकल में ये लिखा है? दैट इज ऑप्शन बी आर्टिकल 169। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, दैट इज आर्टिकल 143। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच आर्टिकल एस्टैब्लिशेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सो इलेक्शन कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है? दैट इज आर्टिकल 324, 324। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द CAG, that is Comptroller and Auditor General, is appointed under which article? So option B is the correct answer here. Question number 18, which article empowers the parliament to create a new all India service? ठीक है, सो पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, सो ये किस आर्टिकल के तहत? ऑप्शन सी आर्टिकल 312। क्वेश्चन नंबर 19, which article states that no tax shall be levied or collected except by authority of law? सो किस आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी टैक्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा ऐसे ही मनमानी हिसाब से नहीं लिया जा सकता वो टैक्स? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, दैट इज आर्टिकल 265। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ? सो यार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10th शेड्यूल। ओके, Question number 21, which amendment reduced the voting age from 21 to 18 years? So option C is the correct answer, that is 61st Amendment Act, जहाँ पे कि वोटिंग का एज पहले 18 था, उसे 21 किया गया है। ठीक है, सॉरी इट्स 18 था, 21 था पहले वोटिंग का एज, रिड्यूस करके 18 किया गया है। ठीक है,
Question number 22. Which constitutional amendment is known as the mini constitution? So here option C is the correct answer, that is 42nd Amendment Act. तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें के अमेंडमेंट जो हुआ था, इसीलिए इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 23. अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट amend the constitutions? So ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 368. इसके तहत पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 24. नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द अंडर व्हिच आर्टिकल? सो किस आर्टिकल के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है? क्वेश्चन सॉरी हेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 352. Question number 25. Financial emergency is provided under which article? So here option C is the correct answer, that is option C, article 360. Question number 26. Under which article is the governor of a state appointed by the president? So option B is the correct answer, that is article 155. Question number 27. Which article provides the pardoning power to the governor of a state? सो गवर्नर का भी पार्डोनिंग पावर होता है लाइक प्रेसिडेंट. सो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 161. क्वेश्चन नंबर 28. प्रोविजन फॉर द पंचायती राज सिस्टम दैट इज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट आर कवर्ड अंडर व्हिच आर्टिकल? सो इस अमेंडमेंट जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है, दैट इज 73rd अमेंडमेंट, किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? दैट इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O. Question number 29. Which article describes the duty of the Prime Minister in furnishing information to the President? So here option C is the correct answer, that is article 78. Question number 30. Which article provides for the establishment and constitution of Supreme Court? So option A is the correct answer, that is article 124. Question number 31. Which article gives the Supreme Court the power of special leave to appeal? सो यार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्पेशल लीव टू अपील किस आर्टिकल में दिया गया है? दैट इज 136. क्वेश्चन नंबर 32. अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स और ऑर्डर? ठीक है, अपना खुद की दिए हुए जो जजमेंट्स और ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है. अंडर व्हिच आर्टिकल? दैट इज आर्टिकल 137. क्वेश्चन नंबर 33. व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट? सो हेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 214. Question number 34. The National Commission for Scheduled Caste is established under which article? So here option A is the correct answer, article 338. Question number 30. Question number 35. Which article provides for the administrative tribunals to resolve recruitment disputes? सो रिक्रूटमेंट में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान है. तो ये किस आर्टिकल में किया गया है? दैट इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 323A. क्वेश्चन नंबर 36. द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज आर्टिकल 266. क्वेश्चन नंबर 37. Which article deals with the adjudication of disputes relating to water and interstate rivers? So option A is the correct answer here, article 262 जो रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 38. Which article specifies that the official language of the union shall be Hindi in Devanagari script? So option B is the correct answer here, article 343. Question number 39. Special provision for the state of Nagaland are mentioned under which article? So option B is the correct, that is article 371A. Question number 40. Which article deals with the doctrine of pleasure regarding the tenure of civil servants? ठीक है, सो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कुछ होता है ना, तो ये वो है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, दैट इज 310. Question number 41. Which article directs the state to organize village panchayats as units of self-government? So option B is the correct answer, that is article 40. Question number 42. The provision for a uniform civil code for the citizens is mentioned under which article? So option B is the correct answer, that is article 44. Question number 43. Which article provides for separation of judiciary from executive in the public service of the state? So here option C is the correct answer, article 50. Question number 44. Under which article is the finance commission constituted by president every 5 years?
सो फाइनेंस कमीशन का जो प्रावधान है फॉर क्रिएशन ऑफ इट्स इन एवरी 5 years बाय प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? दैट इज ऑप्शन सी आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच आर्टिकल ग्रांट्स रेसिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन टू द पार्लियामेंट? सो ऑप्शन सी is the correct answer, that is article 248. Question number 46, right to property was moved from fundamental right to a legal right under which article? So option B is the correct answer, that is article 300A. Question number 47, which article empowers the parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest? So here option B is the correct answer, that is article 249. Question number 48, which article deals with the protection against arrest and detention in certain cases? So option C is the correct answer, that is article 22, ये फंडामेंटल राइट का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, the interstate council is established to coordinate between states and union under which article? So option B is the correct answer here, that is 263. Question number 50, during a national emergency which articles cannot be suspended even by a presidential order? So आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 51, which article defines the quorum minimum 1/110th members required for a house of parliament to meet? So here option B is the correct answer, that is article 100, जहाँ पे कि quorum को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, the power, privilege and immunities of the houses of parliament and its member are defined under, that is option B article 105. Question number 53, which article deals with the vacation of seats in parliament? So option A is the correct answer, that is article 101. Question number 54, under which article does the governor have the power to address and send messages to the state legislature? So option C is the correct answer, that is 175. Question number 55, which article empowers the parliament to constitute or declare a high court for a union territory? So option C is the correct answer, that is 241. Question number 56, the appointment of special officer for linguistic minorities is mandated under which article? So option C is the correct answer, that is article 350B. Which article provides for the grant in aid from the union to certain states? ठीक है, so option A is the correct answer here, that is article 275. Question number 58, under which article is the Public Service Commission, that is UPSC or state pieces established? So here article B is the correct answer, that is article option B is the correct answer, article 315. Question number 59, which article protects a civil servant from being dismissed or removed by an authority subordinate to that by which they were appointed? So option C is the correct answer, that is 311. Question number 60, the contingency fund of India is established under which article? So option B is the correct answer, that is 267. क्वेश्चन नंबर, ये कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 61, which article provides for the prohibition of traffic in human beings and forced labor? So ये आपको पता ही है, आर्टिकल 23. फिर नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 29. Which article grants the right of minority to establish and administer educational institutions? So option B is the correct answer, that is article 30. The promotion of international peace and security, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? दैट इज ऑप्शन डी आर्टिकल 51. Under which article is the Vice President of India mandated to be the ex officio chairman of the Council of State, that is राज्य सभा? सो ये किस आर्टिकल में लिखा है? दैट इज आर्टिकल 64. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. Which article deals with the pardoning power of the president? So president का pardoning power किस आर्टिकल में है? दैट इज आर्टिकल 72. The Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the president is mentioned under which article? So option B, that is article 74. Which article specifies the composition of the Council of States, that is Rajya Sabha? That is option B, article 80.
Which article specifies the composition of the House of the People, that is Lok Sabha, that is option B, Article 81. The qualification of for membership of parliament is defined under which article? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 84, जहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है जो एमपीस होते हैं ना वहाँ के. Which article provides for the secretariat of parliament? So option A, article 98. Under which article is the Supreme Court declared to be the court of record? Under article 129. Option C is the correct. Which article defines the original jurisdiction of the Supreme Court? So here option A is the correct answer, article 131. The Advocate General of State is appointed under which article? That is article 165. Option B is the correct. Which article deals with the assent to bills by the governor, including receiving a bill for the president? So option B, that is article 200. The constitution of Finance Commission to review the financial position of Panchayat is under which article? So option A, article 243I. Which article establishes the National Commission for Scheduled Tribes? So option B, article 338A. Which article empowers the president to appoint a commission to investigate the condition of backward classes? So option B is the correct answer, that is article 340. The proclamation of state emergency due to failure of constitutional machinery is under which article? So option B, that is article 356. Which article contains the definition of the term state for the purpose of fundamental rights? So here option B is the correct answer, that is article 12. So this is the end of this video and thanks for watching.